हाय एवरीवन, दिस इज़ रिचा। चलिए आज हम समझते हैं ardent का मतलब एंड वी ऑल्सो लुक एट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटेंसेस सो दैट आप उसको यूज़ कर सकते हैं व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग। सो ardent इज़ बेसिकली यूज्ड टू डिस्क्राइब पैशन एंड व्हेन यू हैव too much of admiration for somebody or something, right? And you're in awe of something, mostly उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। एंड द फर्स्ट एग्जाम्पल, लेट्स take an example of me being a die-hard fan of Virat Kohli, right? So I can say I'm an ardent fan of Virat Kohli. I'm an ardent follower of Virat Kohli. Okay, and now the second example, let's assume that someone is, let's say Ria, okay? Ria is a supporter of the Buddhist philosophy. So we can say Ria is an ardent supporter of the Buddhist philosophy. That can be the second example. Ardent का एक और मतलब है burning. So sometimes you might read somewhere the ardent flames, but to a less commonly used, mostly it is used to denote or signify admiration or passion for something. Yeah, okay, bye.